Bismillahirrahmanirrahim. I'm Rubina Shujit from UMT Alumni Office, and today we have with us a shining alumna of UMT, Dr. Zunaira Saqib, an educationist associated with NUST as an assistant professor. She is founder and CEO of MeraFuture.pk, a career counseling website. Dr. Zunaira, I welcome you in this interview session. Thank you so much. Thank you for inviting me. Okay, Dr. Zunaira, please share your journey as an educationist to career counselor. I won't say it's a journey which has ended my academic career. I'm still an academic by heart, a teacher by heart. But I have moved towards this and I've started career counseling because I feel that this is something which is missing from Pakistani society, which is missing from Pakistani institutes. So that's why I moved towards giving counseling to students at a professional level. I do feel that I have been providing in-person counseling for a very long time, helping people make this decision. But I think the reach in that terms is very low. So now that we have started it on a professional basis, now our reach is huge, considering that we are approaching the whole Pakistan in all sorts of institutes and all sorts of institutes. Well, your project has covered by BBC Urdu. What are the salient features? Please share with us. BBC Urdu को cover करने से पहले there were multiple other channels which covered it, and there was a lot of acceptance of it by various students and parents in education institutes. So BBC Urdu coverage did basically helped us grow our customer base a lot, and it helps us get accessibility to the areas जहाँ पे हम पहले शायद इस तरह से approach नहीं कर पा रहे थे. So in the far-flung areas of Pakistan, and many Pakistanis who live overseas, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं या खुद वहाँ पर हैं भी, and they want to send their kids to study in Pakistani universities. They were the ones जो कि इस project के बाद they came to know about the project as well, and they started approaching us. अच्छा डॉक्टर साहबा, आप प्लीज हमसे शेयर करें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट के थ्रू आपने कितने बच्चों को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड किया है? So far पिछले एक साल में हमने जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था. हम 10,000 बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और डेली बेसिस पे इसमें इजाफा हो रहा है. यूजुअली जब हम स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ इन टच होते हैं, तो इन वन डे समटाइम्स वी आर सर्विंग एज मेनी एज 300 स्टूडेंट्स. So daily basis पे students are coming on the website as well as the institutes who we go to when we conduct these tests. So 10,000 students in total, and increasing each day. So you designed MS HRM program and received Best Teacher Award at NUST Business School. What value you added in this course? I mean, in this conventional course? MSHRM की जो डिग्री है ये हमने 2014 में स्टार्ट की थी. I won't say I have designed it completely. I was part of the team which designed it and launched it, and we are very proud of it because in the past 6-7 years it has become one of the very prominent programs in Islamabad, and we do get a very high quality of applicants, और जो हमारे applicants हैं उनका employment rate भी जो है वो बहुत अच्छा है. MSHRM की डिग्री डिजाइन करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि हमारे एचआर की स्पेशलाइजेशन जो एमबीए में ऑफर होती है वो बस एक हद तक एचआर को कवर करती है. तो हम भी चाहते थे कि एचआर के अंदर भी ऐसी स्पेशलाइजेशन हो जो कि बच्चों को ना सिर्फ कोर कोर्सेज के बारे में मजीद बताए, कोर एरियाज के बारे में बताए, बल्कि दे शुड बी एबल टू डू रिसर्च इन दैट एज वेल. तो क्योंकि पाकिस्तान में एचआर के पीएचडीज भी कम हैं और एचआर के अंदर रिसर्च की भी काफी कमी है, सो वी थॉट कि एमएसएचआरएम वुड बी अ गेटवे to start that research in Pakistan, to start producing those people who will go on to do their PhDs in HR. So that was that, and very humbled by receiving the Best Teacher Award from NBS. I think कि बहुत NBS last के अंदर जो teachers हैं, they are all fantastic people, and getting an award in 2017 it meant a lot. But all the other teachers that are there, उन सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और डेली बेसिस पे सीखते रहते हैं, और टीचिंग जो है it is all about learning on daily basis. So I think starting that program and getting involved in some of the trainings and also helping students do their courses in innovative manners, I think these were some of the factors that led to the award. However, I don't think it's the end of it, and I also don't think this is the ultimate thing. Every year each deserving teacher gets this award, and I'm just very humbled to be part of that group who was considered for this.
ओके, अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि पेंडेमिक के दौरान जो स्टूडेंट्स थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर हो गए, और आप क्या समझती हैं कि ये बेनिफिशियल है या इट हैज क्रिएटेड अ पैनिक अमंग देम? आई थिंक दोनों एंड हैं इसके, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव एंड ये है कि मैं तो खासतौर पे अपने स्टार्टअप के लिए स्कूल और कॉलेजेस से डील करती हूँ, तो यूएमटी में या इस तरह की और अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, इंटरनेट इज वेरी वाइडली अवेलेबल। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के लिए तो बिल्कुल एक नई चीज थी कि हमें इंटरनेट भी रखना है और हमारे टीचर्स को ऑनलाइन भी पढ़ाना पड़ेगा, और जो स्कूल के बच्चे थे वो भी इस चीज के आदी नहीं थे। तो एक तो फायदा इसका ये हुआ है कि काफी ज्यादा स्कूल्स कॉलेजेस में इंटरनेट आ गया है, द टीचर्स हैव लर्न दीस स्किल्स, सो दैट्स फैंटास्टिक। हाउएवर एट द सेम टाइम ऑब्वियसली देयर इज अ नेगेटिव साइड ऑफ इट एज वेल, दैट देयर इज टू मच स्क्रीन टाइम। और बीइंग अ टीचर आई फील कि जब आप एक क्लास में होते हैं और बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी होती है, बच्चे के साथ आपका डिफरेंट रिलेशनशिप बिल्ड होता है एज कम्पेयर टू जब आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं और उसमें बच्चे अपने कैमरे भी ऑन नहीं करते हैं, समटाइम्स यू फील लाइक यू आर टीचिंग द वॉल। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव्स दोनों उसके अंदर हैं, बट आई थिंक कि अगर हम नेगेटिव्स को छोड़ दें तो इन द पास्ट 1 years ओवरऑल एज अ सोसाइटी एज अ कंट्री वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव। ऑलराइट, अच्छा मेरा एक छोटा सा पर्सनल सवाल है कि व्हाट वाज द पैशन दैट केप्ट यू मोटिवेटेड इन परस्यूइंग योर करियर इन पर्टिकुलरली इन एजुकेशन? मैं यूएमटी में आई थी 2002 में, और यूएमटी में आने से पहले तक मैंने जितनी पढ़ाई की थी वो इसलिए की थी कि और कुछ करने को नहीं था और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई से, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जो मैं पढ़ती थी, बिकॉज देयर वाज नो गाइडेंस। एंड यूएमटी में भी मैं आपको बताऊं कि आई गॉट एडमिशन इन एमएस इन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस। और जब मैंने शुरू करनी थी अपनी क्लास तो उससे एक दिन पहले माय ब्रदर टोल्ड मी कि इट्स बेटर दैट यू शिफ्ट टुवर्ड्स एमबीए बिकॉज़ इन एमएस कंप्यूटर साइंसेस देयर इज नो स्कोप। सो टू बी ऑनेस्ट इवन एट दैट पॉइंट मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, बस मैंने बाय चांस एमबीए में स्विच कर दिया। But when I did switch to MBA and I started studying courses of marketing and HR, it was just fantastic. It was something that opened doors for me. It was something I was interested in. उससे पहले मुझे लगता था कि शायद मुझ में कोई मसला है, शायद हम नालायक हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए हमें पढ़ाई पसंद नहीं है। But when we got to UMT and we got exposure to all of these subjects and projects and everything, so for UMT मैं इसका बहुत credit देती हूँ, मैं समझती हूँ कि UMT was the reason that I went into this side and I actually started feeling a value in the studies and I started attaching value to myself as well. और वो जो था that was a starting point, और MBA के बाद मुझे हुआ कि HR के अंदर मुझे specialization करनी है, so I went on to do a masters in HR from UK. एंड सिमिलरली उसके बाद मैं एकेडेमिया में जब आ गई तो एकेडेमिया में आके एहसास हुआ कि पीएचडी बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर 2012 में मैंने अपनी पीएचडी शुरू की, टू 6 years। तो पैशन उसके पीछे यही है कि जब आप एक ऐसा प्रोजेक्ट या आपको ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है जो आपको पसंद है तो फिर आपके लिए पढ़ाई नहीं रहती, फिर आप एंजॉय करने लग जाते हैं। ये स्कूल नहीं है कि जहाँ पे जबरदस्ती जाना सुबह अगली उठा के भेजेगी, ये यहाँ पे स्टेज पे आते आते यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू एंजॉय इट एंड देन यू परस्यू इट। If I was in a field that I did not like and enjoy, so I wouldn't have gone to my PhD in that. I only did my PhD क्योंकि मैं इसको enjoy करती हूँ। उसके पीछे passion जो था वो सिर्फ यही था। और जब मैंने वो कर लिया फील्ड तो मैं समझती हूँ कि it's time to give back and it's time to guide the students जो कि उसी स्टेज से गुजरे हैं जिस स्टेज से मैं 2002 और उससे पहले जो है मैं गुजरी थी। और by chance I got into the field and area जो कि मेरी पसंद का है और जिसको मैं enjoy करती हूँ, लेकिन हर बच्चे को चांस नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को चांस दिया जाए, बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए, then when they select their field, they select it, enjoying it, and then they pursue it, and then they progress in it. तो पैशन उसके पीछे बस यही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, you are alumni of UMT, University of Leicester and Lancaster University. What common you found in all three universities and how they shaped your life? कॉमन तो शायद मैं ना कहूँ, आई थिंक ऑल यूनिवर्सिटीज शेपिंग वेरी डिफरेंटली। सो यूएमटी को मैं ये कहूँ कि यूएमटी वाज द गेटवे टू एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। बिफोर यूएमटी मुझे नहीं पता था कि ये फील्ड्स होती हैं, मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में आगे जाकर मुझे कुछ करना है, अगर करना है तो क्या करना है। तो कुछ टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प की इस चीज को समझने में, बहुत मोटिवेट किया। सो यूएमटी जब हम यूएमटी में पढ़े थे तो यूएमटी आईएलएम होता था, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, व्हिच हमारी आंखों के सामने फिर रिटर्न इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड शिफ्टेड टू जवाहर टाउन कैंपस। सो आई थिंक एक यूनिवर्सिटी को देखना ग्रो करते हुए, जब आप भी ग्रो कर रहे हो, इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। So having an affordable education and having a quality education,
in Lahore back in those days was really good, and it really did change my life. Then when I went to University of Lancaster, the University of Lancaster or foreign education system is very different from Pakistan. They teach you to think on your own, which is something जो कि हम पाकिस्तानी और इंडियंस और जो साउथ एशिया के लोग हैं बड़ा स्ट्रगल करते हैं कि थिंक ऑन योर ओन भी करना है. हम तो समझते हैं कि बुक एक सजेस्ट हो जाए कोर्स में तो वो पढ़नी चाहिए. लेकिन University of Lancaster taught me that you need to think on your own, you need to be your own person, you need to have your own thought process, and I think I give a lot of credit to Lancaster for that. And then Leicester, of course, PhD, and I think the biggest thing I learned from my PhD is being humble and knowing that I know nothing. आई थिंक उससे पहले बस कुछ ही होता है कि ईगो में इंसान ही सोचने लगता है कि शायद मैंने मास्टर्स कर लिया है यूएमटी से और लैंकास्टर से तो मैंने तो बड़ा कारनामा किया और आपके बड़े बड़े आदमी बन गए हैं. लेकिन पीएचडी जो है वो आपको सिखाती है कि आपको कुछ भी नहीं पता. There is so much knowledge out there, and even if you can learn a fraction of that in this lifetime, that would be huge. और आपको fraction भी सच्ची बात है कि वो सीख नहीं पाते. So I think all three universities contributed differently in my life, and depending on of course the age and the time that I joined those universities, they made a huge difference. Alright, good to know. अच्छा डॉक्टर साहब कोई आप अपना ILM के टाइम का कोई अपनी बेस्ट मेमोरी हमसे शेयर करना पसंद करेंगी? ILM की मेमोरीज तो बहुत सारी, मैं सोच रही हूँ बताने वाली कौन सी है कौन सी नहीं. I think one of the things that I would always remember and I would enjoy is the diversity that we had in our class. We had a huge batch. It was around 75 people, and there were only 8 girls in that, and we were divided into 2 sections, section A and B. And we had people who came from all sorts of backgrounds. We had some people who came from elite background. We had middle class people. We had people from far-flung areas of Punjab. And I think the diversity that they brought in and the learning that we had at that time, जो कि उस time पे realization honestly नहीं थी इतनी, लेकिन बाद में जब आप when you look back, when you realize that studying with those people, you learn a lot of things. And I think it was UMT, and again, as I said, affordable education or quality education was the reason that we were able to interact with those people. So that was fantastic. And of course, I can never forget the finance classes of Sir Nizam. I've heard he's still there. And we were really, really scared of him, and we were really scared of failing finance. But he was a fantastic teacher, he was a really good teacher. And Sir Tashfeen was there. I've heard he's still there as well. Sir Mubin, I mean, all of these people, they have taught us. They have taught us so much about life and about various subjects. And I envy those memories. I cherish those memories. Okay, any suggestion for alumni office? I think alumni office is doing a great job approaching out to the people who are in the market. So that's really fantastic. It's really good. I think जो आपके बच्चे हैं अभी currently जो कि UMT में पढ़ रहे हैं, so these interviews are really good. I think they would, if they can have time and they can look at it, that would be good. But in-person interaction, counseling के point of view से to help students understand कि अगर वो marketing की majors ले रहे हैं तो marketing में आगे क्या options हैं. I think this was something missing in our time क्योंकि हमने subjects इस basis पे choose किए कि मुझे पसंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे उसमें career जो है वो किस तरह का बनेगा, ये कैसा बन सकता है. So I think somebody from the field, जो कि alumni office, I'm sure that you have database of so many people, they can come, they can talk to the students at a very early stage and tell them what are the options out there, how they can make most out of their time in UMT. I think that would be a fantastic initiative. Okay, Dr. Sagar, thank you so much, and thank you for joining this session.